Hi guys, how has everyone been? I am not sure about you guys, but I've really missed making vlogs and I'll try to be very regular. Just was a little down with health issues, but yeah, I'm back on track again. So I'll be showing a quick breakfast recipe. It's one of my favorite and it's really light on the stomach and it doesn't require a lot of oil. So yeah, let's begin. So I'll be making chutney first. So for that I've taken a little bit of chana dal, peanuts, curry. You can also have fresh coconut. I didn't have that, and a little bit of garlic too. Then you don't have too much. You just have to dry roast them so that अगर कोई moisture है तो वो निकल जाए. So I'm actually making appe. It's a South Indian dish. I've done the preparation for the chutney, the one that you saw. Once it's gonna cool down, I am going to blend it. So that's just a regular peanut and coconut chutney. I'm also going to put some veggies in it because I have available. You can also make it without veggies. So I have corn. I've already boiled them. These are those sweet corns, I would say. I've got onions, I've got capsicum and chilies as well. You can put any veggies of your choice. If you have carrots, if you have some other veggies. This was what was available in my fridge, so I'm gonna put this. But you can put whatever you want. You can also make it without veggies if you want. So yeah, let's go for the next process. बस अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है. You just have to saute whatever vegetables that you're gonna put. Now अगर आप saute नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, but I like it this way, so I'll saute. And I'll also blend the chutney because it's cooled down now. And I forgot to add dhania, so I'm adding it now. Now my chutney is done, and let's prepare appe then. So this is nothing, just suji, dahi and rice flour. आप राइस फ्लावर के बिना भी बना सकते हो, पर मुझे राइस फ्लावर काफ़ी पसंद है. एंड दिस इज़ फॉर 6 पीपल. सो आप अगर खुद के लिए बना रहे हो या फिर लोग कम ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से ले सकते हो. सो अगर आधा कप सूजी लिया है आपने तो आप 1/3 उसका राइस फ्लावर लो. अब मैं सारे वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर दूँगी. बस अब आगे का प्रोसेस इज़ वेरी इजी. आपको बस इसे मिक्स कर लेना है और इसी स्टेज पे यू विल हैव टू सी कि अगर बैटर ज़्यादा थिक या रनी तो नहीं है, और सॉल्ट भी आपको चेक कर लेना है कि कम ज़्यादा तो नहीं है. नाउ दिस इज़ एन अप्पे मेकर. आई एम श्योर यू हैव सीन इट ऑनलाइन एंड इट मेक्स इट वेरी ईजी. एंड ट्रस्ट मी गाइज, एक अप्पे मेकर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं सिर्फ इसमें अप्पे नहीं, पैनकेक्स या कुछ भी हो अगर मुझे खाना हो तो मैं ऐसे बना सकती हूँ. एंड इन केस आपके पास अगर ये नहीं है तो आप सिंपल इसे तवे पे भी बना सकते हैं, बट देन इट विल बी मोर लाइक इन उत्तपम. बस शेप का फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी. और ये मैं तड़का रेडी कर रही हूँ अपने चटनी के लिए. I've just added some rye in it and that's it. और this was very thick for me, so I added a little bit of water and एक boil आने पे it's done. And here's the final outcome. Here's my appe. They're looking nice and fluffy, and here's my chutney as well. एंड मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ. दिस इज़ जस्ट अ वॉइस ओवर, बट यार मुझे अभी भी मुंह में पानी आ रहा है. इट वाज रियली यमी एंड इट वाज वेरी टेस्टी. इफ़ यू मेक इट डू लेट मी नो कि कैसा बना था. एंड इफ़ यू ट्राई इट इन योर वर्जन ऑल्सो लेट मी नो कि हाउ वाज इट. And my updates are ready. Let's give it a try and see how is it. A little hot at the moment. Bon appetit. The heaven. What's that phrase when we go to Kashmir and we say Amiyastu, Amiyastu, Amiyastu? This while I eat this and finish this. Thank you so much for watching, guys. Take care. Love you.